साथ यहाँ पे दिया हुआ है cerebrospinal fluid is produced from the blood vessels of the brain in spinal cord through which combine processes. So by diffusion, phagocytosis and active transports हमारे पास correct option आएगा. Option B is correct. Second MCQ पे आते हैं. In which exact anatomical location is the cerebrospinal fluid found surround the surface of the brain and spinal cord? So that's present between the pia matrix and arachnoid spine. यहाँ पे पाया जाता है. MCQ third पे आते हैं. The forebrain is divided into stellencephalon and diencephalon. Which of the following correctly describe the compositions of stellencephalon? It consists of two components. One is olfactory bulbs and another is cerebrum. So correct option हमारे पास C. MCQ आते हैं. Fourth number. Which specific structural regions harbors the limbic system? Limbic system diencephalon में पाया जाता है और वो हमारे पास बनता है hypothalamus, amygdala, hippocampus. Fifth पे आते हैं. The reticulus formation is involved in sleep, in wakefulness, pain perception, breathing, and muscle reflexes. Through which region does it run? Through hindbrains. Option B is correct. MCQ आते हैं. Sixth पे. Which functional role is explicitly attributes to the bones? So affecting activity such as sleep, waking, and dreaming. Option C is correct. MCQ 7 पे आते हैं. Which part of the brain is specifically responsible for helping us locate events in space? They are present in the midbrain. तो हमें बैलेंस रखना है. 8 नंबर पे आते हैं. Which specific structural component of sensory neuron directly transmits the nerve impulse to the dorsal roots ganglion during the reflex action? Peripheral branch. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंसरी न्यूरॉन जो है यूनिपोलर है. यूनिपोलर है, इसका सिंगल एक्सटेंशन दो में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल. पेरिफेरल टुवर्ड dorsal root of ganglion which act as a dendron. MCQ 9 पे आते हैं. Which reflex activities do not involve the brains for the immediate response? How is the brain informed about the dangers? Option C. The sensory neuron make a separate synapse with the associated neuron not involved in the reflex arm. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि synapses हमारे पास दो किस्म के हैं, एक मोनोसिनैप्टिक और एक रिफ्लेक्स नहीं पड़े. दो किस्म के होते हैं, एक मोनोसिनैप्टिक है और एक पॉलीसिनैप्टिक है. हमारे पास जो मोनोसिनैप्टिक है ये सिंगल सिनैप्स इन्वॉल्व करता है और जो पॉलीसिनैप्स है ये मोर देन वन सिनैप्स इन्वॉल्व है. मोनोसिनैप्स है, इसमें नो इंटरन्यूरॉन, इसमें इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं, जबकि पॉलीसिनैप्स में हमारे पास मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व. मोनोसिनैप्टिक एग्जाम्पल जो है वो नी जर्क है और पॉलीसिनैप्टिक एग्जाम्पल विथड्रॉल इफेक्ट है. मोनोसिनैप्टिक जो है वो इंटरन्यूरॉन्स जो है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, अलबत्ता फिर बाद में सेंसरी न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन्स को इन्फॉर्म कर देता है. व्हाट वी हैव डन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 10th पे आते हैं. इन the nerve impulse conduction, what does the term electrochemical mean? Electricity generates. Option B. Electricity generated through the interactions of the chemical ions in charge-bearing organic molecules. 11.
what serves as the physical charge separating period in the neuron? The neuron membrane जिसको न्यूरोलीमा कहते हैं और एक्सान में इसको एक्सोलीमा कहते हैं। 12. How do pump and gates differ fundamentally in their mechanism of the ion transport? Pump perform active transport, while gates perform facilitated diffusion. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो किस्म के हमारे पास चैनल पाए जाते हैं, एक हमारे पास पंप है और एक हमारे पास गेट्स होते हैं। गेट जो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है वोल्टेज रेगुलेटरी गेट और एक हमारे पास है नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट। नेक्स्ट हमारे पास है 13. Which type of membrane signals functions continuously without needing a specific electrical stimulus to open or close? Non-voltage regulatory gates. ये हमेशा ओपन होते हैं। MCQs आते हैं 14 पे। What term is used to describe the stored potential energy that is manifested during the separation of charge across the neuron barrier? Membrane potential जिसको कहते हैं, जो फिर दो स्टेट में पाई जाती है, resting और एक action। 15. What are the two specific exhibited form of membrane potential? Resting membrane potential और दूसरा है action membrane potential। उसकी फिर अपनी स्टेट में जाती है। 16. Which statements accurately describe the distinction between the neuron and glial cells? Neurons are the structural and functional units of the nervous system, while glial cells provide protective support material and nutrients. आपको पता होगा कि मुख्तलिफ किस्म की ग्लायल सेल्स हैं, जिसमें आप लोगों ने श्वान सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा एस्ट्रोसाइट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोग्लियल सेल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जो श्वान सेल्स है ये हमारे पास पाया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 17. Which specific components of the myelin sheath allow a nerve impulse to travel rapidly by escaping along the neuron? Regularly spaced nodes are given. Option C is correct, जहाँ पे इसको नोड ऑफ रेनवियस कहते हैं या न्यूरोफाइब्रस नोड कहा जाता है। 18. What is the true composition and biochemical nature of myelin? It is a lipid produced by specific type of necrotic glial cells. Option C. 17. Which specific components of myelin sheath allow a nerve impulse to travel rapidly by escaping along the axons? Axons हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन और सेल बॉडी। अब इनमें जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर माइलिन शीट्स पाया जाता है। माइलिन शीट सिर्फ एक्सॉन के ऊपर होता है। न्यूरॉन जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन। अब एक्सॉन में अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स की जो स्पीड है वो फास्ट है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे साल्टेटरी इम्पल्स होती है, यहां पे इम्पल्स जो है वो जंपिंग फॉर्म में होगी। जो हमारे पास जहां पे माइलिन शीट नहीं होता, अगर माइलिन शीट नहीं है तो यहां पे हम कहते हैं कि ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए। अब जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे कंटिन्यूअस इम्पल्स होगी। अब जहां पे कंटिन्यूअस इम्पल्स होगी वहां का जो स्पीड है वो है हमारे पास 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। तो माइलिनेटेड वाला जो होता है इससे 20 टाइम फास्टर हुआ।
20 टाइम इसलिए फास्टर हुआ कि यहां पे 100 है, उधर 5 है, यहां पे 120 है तो उधर 6 है, सो 20 टाइम फास्टर हुआ। तो कहते हैं कि what specific components of myelin sheets allow a nerve impulse to travel rapidly by escaping along, वो जंपिंग फॉर्म में कर रहा है, क्योंकि अगर यहां पे एक्सान है और इसके ऊपर आपको माइलिन शीट्स यहां पे पाया जाता है, सो इस माइलिन शीट्स की वजह से स्कैपिंग कर रहा है, जंप फ्रॉम यहां से यहां, यहां से यहां। सो ये जो नोड ऑफ रेनवियर्स है या न्यूरो फाइब्रिल्स, नोड वाली जगह पे यहां पे आयन एक्सचेंज होंगे, तो यहां पे ये फास्ट हो गया इस वजह से। हाँ, द लिपिड्स कंपोजिशन ऑफ माइलिन शीट्स इंसुलेटिंग लेयर कंप्लीटली तो इंसुलेट नहीं कर रही ना, जगह जगह पे स्पेस पाया जाता है, तो उसको स्केप किया जा रहा है, उसको वो स्केप कर, स्केप करने का मतलब क्या होता है, इस यहां पे तो एक्सचेंज आप नहीं कर सकते, यहां तो ये तो इंसुलेटर हुआ, तो इस जगह पे आप इसको स्केप करेंगे, स्केप मींस जंप लगाना, उसको आप स्केप करेंगे। एमसीक्यू दिया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास 19, इफ अ न्यूरॉन एक्सॉन लेक अ माइलिन शीट्स कंप्लीटली, हाउ डज इट्स कंडक्शन कंपेयर टू द माइलिनेटेड काउंटर पार्ट्स, स्लोअर स्पीड। तो ऑप्शन ए वो आप लोगों को मैंने भी बता दिया। 20, And a nerve impulse is traveling from organ to the peripheral back towards the central nervous system, spinal cord and brain. Which type of neuron is explicitly responsible for this direction of transmission? Sensory neuron. In figure 21 पे आते हैं, calling it the classification system. What is the precise functional role of interneuron? C. They conduct nerve impulse back and forth between sensory motor neurons. 22. Which parts are explicitly at the three basic parts that comprises a single neuron? Option C. 23rd. What is the primary path of incoming signal reception for a typical neuron? Dendrite extend from the cell body and receive nerve impulse from the other neuron. Option B. 24. Which type of neuron carries nerve impulse away from the brain and spinal cord, targeting effector like muscle and gland? Motor neurons. 25. The resting membrane potential measures about -70 millivolts. What does the minus sign specifically signify in the biological context? क्या मतलब है? C. The outside surface of the neuron membrane is negative with respect to the inside, so the option C. इसका रीजन क्या है? आपको पता है ना कि इनसाइड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 30 टाइम और आउटसाइड सोडियम की आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम। अब आपको पता है कि 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन जो है वो एक्सचेंज होती है, तो अंदर से अगर 3 सोडियम आयन जा रही है और बाहर से 2 पोटेशियम आयन इंट्रोड हो रहे हैं, इन सब पे कौन सा चार्ज है? 2 आपके पास पोटेशियम आयन है और 3 आपके पास सोडियम आयन है, तो 2 को 2 के साथ काट दे, 1 रह गया, तो ऑब्वियसली बाहर वाला जो है पॉजिटिव और अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है। 26. During the establishment of the resting membrane potential, what is the exact movements of the charge across the neuron membrane per cycle of the active transport pump, and what internal potassium environment does it help? Option B, ये तो अभी मैंने बता दिया, net transport of one positive charge outwards. Option B. 27. Why do organic compounds like DNA, RNA, and other specific proteins persistently contribute to the negative charge inside the neuron cytoplasm? C. They contain negative charge, such as proteins from aspartic and glutamic acids, and remains trapped inside the cytoplasm. या जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसका फॉर्मूला है NGA,
N stand for negative, G stand for glutamate, and A stand for aspartate. अब ये aspartate और glutamate वाले अमाइनो एसिड या वो प्रोटीन जो इन अमाइनो एसिड से बना हुआ है नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इनसाइड रहेंगे। लेकिन हाल HALP, P stand for positive, H for histidine, I for arginine and L for lysine। अब ये अमाइनो एसिड या वो प्रोटीन जो इन अमाइनो एसिड से बने हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये बाहर रहेंगे। ऐसे आते हैं नेक्स्ट 28 पे, what is the cross between two parents that differ by a single strand called monohybrid cross? मेंडल की असल में 3 लॉज है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल ट्रेट को क्रॉस किया जा रहा है तो ये मोनोहाइब्रिड है, 2 को क्रॉस किया जा रहा है तो ये डाइहाइब्रिड। 29 Mendel laws of segregation state that alleles separate during gametes formation, so each gamete carries only one allele, so option A is correct. 30 What is the typical genotype ratio in the F2 generation of the monohybrid cross with complete dominance? 3:1. Capital T क्रॉस वाले स्मॉल t इसको P1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेसिप्रोकल क्रॉस का द क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट प्लांट। गेमीट्स बना है, एक को शो कर दे मेल और एक को शो कर दे फीमेल। जब आप इंसर्कल करेंगे इसका मतलब है गेमीट क्रॉस कर ले कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, ये 1 जनरेशन है। अब आपसे अगर एमसीक्यूज में आ जाए कितने गेमीट्स पॉसिबल है तो गेमीट्स से लिखने का फॉर्मूला क्या है वो हमारे पास है 2 to the power n। अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अलील शो कर रहा है। तो अब आपके पास कितने अलील हैं? 2 अलील हैं। So 2 to the power 2 कर 2 multiplied by 2 कितना हो गया? 4 गेमीट्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 गेमीट्स। अगर वो 3 देता तो हम क्या देते 2 to the power 3, तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 कितने हो जाते हैं? 8। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है कि वहाँ पे 8 बन। इसी तरह ये तो नंबर ऑफ गेमीट्स के लिए है। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला होगा 3 to the power n। वहां पे फॉर्मूला जो है वो 3 to the power n शो होगा और n शो करेगा आपके पास नंबर ऑफ अलील। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलील है तो n is equal to 2, तो 3 to the power 2 का 3 multiplied by 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो वहां पे आप उसके पास 9 अलील मिलेंगे। वो आप चेक कर सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y फिर कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y फिर कैपिटल R स्मॉल y फिर कैपिटल R स्मॉल y फिर स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल इस तरह वेरिएबिलिटी करते जाए आपके पास 9 मिलते हैं। 31 What is the genotypic ratio in the F2 generation of monohybrid cross? कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कर ले कैपिटल T स्मॉल t, किसको कहते हैं? ब्रदर सिस्टर क्रॉस। ब्रदर सिस्टर क्रॉस में क्या होता है? इसमें हम दोनों F1 को आपस में क्रॉस करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। पहले गेमीट्स बनाने पड़ते हैं, इसको हम इंसर्ट करते हैं, इसके साथ क्रॉस कर ले तो कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t आ जाएगा आपके पास F2 जनरेशन। फिनोटाइपिकली 3:1 है, जीनोटाइपिकली 1:2:1।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर है 31 में आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी 32 which of the following laws of is demonstrated by the dihybrid cross where traits are inherited independent of one another. Law of independent assortment. 33 what is the phenotypic ratio in the F2 generation of the standard dihybrid cross? Phenotypic ratio का ऑप्शन सी 9:3:3:1 आ जाएगा. 34 a test cross is performed to determine the genotypes of an organism showing a dominant phenotype. What is organism crossed with? Homozygous recessive parent को क्रॉस करते हैं. अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर ले, ये हेटेरोजाइगस है. कैपिटल टी तो ये हमारे पास बेग क्रॉस है. लेकिन अगर हम इसको क्रॉस कर ले रिसेसिव के साथ, तो अब ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस भी है और बेग क्रॉस भी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे. Accordingly to the law of dominance allele marks the expression of recessive allele in heterozygous. So option B is correct. Good आते हैं 36 पे. If you cross a homozygous stall plant capital T with a homozygous dwarf plant small t, what will be the phenotype of F1 generation? All are false. Option C is correct. ये वाला जो क्रॉस करेगा. Good आते हैं 37. What tool is commonly used to predict the genotypes and phenotypes of the genetic process? Unit square. Option B. जो हम इस तरह यूनिट स्क्वायर डायग्राम ड्रा करते हैं इसको कहा जाता है. 38 में आते हैं. What is the expected phenotypic ratio in the standard dihybrid cross involves two traits obeying mental laws of independent assortment? 9:3:1. 39 which type of cross is used to demonstrate mental laws of independent assortment? Dihybrid cross. Figure out the 40 in a dihybrid cross of heterozygous round yellow peas, capital R small r capital Y small y. What fraction of the offspring is expected to be homozygous recessive for both the traits? आपके पास small r small y ये सिर्फ एक ही आता है. So 1/16. So option C is correct. 41 how many different types of gametes are produced by a plant with a genotype capital R small r capital Y small y? आप लोगों को मैंने फार्मूला लिख के दे दिया है. 2 to the power n. So n नंबर आप अलील को करें तो 2 अलील हैं. So 2 to the 2 multiplied by 2 4 आ जाएगा. Mendel formulated the laws of independent assortment based on the inheritance of which organism spread. Garden peat physiology. 42 which of the following represent a dihybrid genotype? Option B. फोर्टी हो गया C. 41 में भी C. 41 में C और 42 में भी आपको B जबकि 43 में है B. अब आते हैं 44 पे. In a dihybrid, capital R small r is tested crossed with a double recessive parent. If it's small r small y small y, what is the phenotypic ratio of the offspring? 1:1:1:1. Capital R, small r, capital
कैपिटल वाई को क्रॉस पहले स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कौन सा क्रॉस है? ये आपके पास टेस्ट क्रॉस है और इसको हम बे क्रॉस बी कहते हैं। टेस्ट क्रॉस बी है, बे क्रॉस बी है। एक को हम शो करते हैं मेल और एक को शो किया जाता है फीमेल। पहले हम बनाते हैं गेमीट, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको कर ले इन सर्कल। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल येलो है, ये रिंकल ग्रीन है। सो 1:1:1। इसका मतलब है देयर इज नो लिंकेज, यहाँ पे लिंकेज नहीं। लेकिन अगर सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर आ जाता, ओनली पेरेंटल कैरेक्टर अवेलेबल, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि यहाँ पे टाइट या कंप्लीट लिंकेज। लेकिन अगर यहाँ पे मोर पेरेंटल्स होते, अगर यहाँ पे मोर पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं और लेस रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पार्शियल या इनकम्प्लीट linkage. In figure 45, the short ejaculatory duct is formed by the junction of which two structures? The walls are different in the duct of seminal vesicles. इनकी junctions पे यहाँ short ejaculatory duct बनता है जो कि seminal vesicles में penetrate हो जाता है। seminal vesicles prostrate glands में penetrate हो जाता है। 46. While the uncoiled length of epididymal duct is highly extended, which specific physiological milestone do sperm cells issue exclusively within this structure accordingly? Option D, temporary storage. C है 45C. The 46 and 46 give you temporary storage, receiving nourishment, and gain the ability to swell. 44 how D this? I mean nothing लिख दें 44 D this. 48 में आते हैं। अब 47. Which cells are identified in between the seminiferous tubule and what is their functional role? Leydig cells. They produce the male sex hormone testosterone. 48. Which components of semen is correctly matched with its specific functional role for description? C. Prostaglandin, compound that decreases the viscosity of cervical mucus and stimulates reverse peristalsis in the uterus. 49. Where the spermatogonia locates is what do they produce upon mitotic division? Option B, just beneath the basal lamina, each division results in two type A and type B daughter cells by mitosis. 50. Which accessory gland is explicitly credited with secreting in alkaline fluid to neutralize the acidity of urine in the urethra, alongside producing thick and clear mucus? Cowper's gland. Cowper gland जो है ये हमारे पास, जबकि seminal vesicle alkaline fluid रिलीज करता है उसमें FCA पाया जाता है। seminal vesicle में FCA mean fructose sugar, coagulating enzyme और ascorbic acid होता है और prostate gland milky acid रिलीज करता है।
So 50 में हमारे पास थी. 51. What is the optimum temperature environment required for proper sperm development? Option B. Slightly less than the core body temperature 35. जबकि respiration के लिए 30 होता है. 52. Which cell type remain in the basement membranes of the seminiferous tubule to ensure the continuous renewal and maintaining the stem germ cell line? Type A. 53 पे आते हैं. During the process of spermatogenesis, which cell stage represents the first fully haploid cell formed immediately after completing meiosis 1? Second is spermatocyte. Option B. 54. If a single type B daughter cell advances into the primary spermatocyte, what is the maximum number of sperm cells and it tends to produce? 4. 55. Germ cell produced through mitotic and meiotic division. What specific cells or structures are found close to the central lumen of the seminiferous tubule? Mature sperm tails and cytoplasm. Germ cells progress through mitotic and meiotic division. Which specific cells or structures are found closest to the central lumen of the seminiferous tubule? तो lumen के साथ वहाँ पे mature sperm tails पाया जाता है. वहाँ पे primordial germ cells नहीं होते, ना ही वहाँ पे spermatogonia है और ना वहाँ पे primary spermatocyte होता है. वहाँ पे cytoplasm बना होता है. वो complete form है. Check करने के साथ किया होगा. 56. Which of the following correctly describes the structural characteristics and ploidy of the newly found spermatocyte before it transforms into mature sperm? Round non-motile haploids. C. 57. Which organism is responsible for synthesizing the hydrolytic enzyme found within the lysosome-like acrosome of mature Golgi body का नाम? C. 58. During spermiogenesis, which structure elongates and runs the entire length of the tail to establish the axial filament microtubule? They are present in embryos. 59. A patient exhibits normal testosterone production, but abnormally high FSH follicle stimulating hormone secretion, accompanied by excessive spermatogenesis rate. A dysfunction in which of the following cell type is most likely responsible? Serotoli cell, क्योंकि वो inhibin production का काम है. After 60. What happened to the feedback loop controlling spermatogenesis when the sperm count falls steeply below standard physiological threshold? Inhibin secretion drops, reducing the negative feedback on FSH and gonadotropin releasing hormone. आपको पता है कि sperm की प्रोडक्शन जो है वो चूंकि hypothalamus gonadotropin releasing हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है. gonadotropin releasing हार्मोन जो है hypothalamus से होता है, ये रिलीज कर रहा है gonadotropin releasing हार्मोन. ये आता है FSH और LH को स्टिमुलेट करेगा. LH मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, लेकिन इस इनहिबिन को कौन रेगुलेट कर रहा है? gonadotropin इसको इनहिबिन रेगुलेट कर रहा है. और इनहिबिन का ताल्लुक किसके साथ है? इनहिबिन का ताल्लुक स्पर्म प्रोडक्शन. Which of the following cells present in the brain tube are responsible for providing nourishment in moisture to cytoplasm? Not ciliated. After this correction. 62. The rhythmic contraction required to expel a baby from the mother's body during child originates from which specific layer of the uterus? Myometrium. Yes, thank you. 63.
3. What is the fate of the ruptured ovarian follicle immediately following the events of ovulation? It transforms into tubular structure called corpus luteum. पहले primordial follicle cells होता है. Primordial follicle cells जो है फिर वो change हो जाता है primary follicle cells. Primary follicle cells जो है फिर वो change हो जाता है growing follicle cells. Growing follicle cells फिर वो change हो जाता है graphian follicle cells. Graphian follicle cells पे change हो जाता है corpus luteum. Corpus luteum पे change हो जाता है corpus albicans. 64. Which statement correctly describes the position of the uterus related to the surrounding pelvic structures? Option C is correct. They are anterior to the rectum, posterior to the bladder. 65. How is the transport of ovulated oocytes toward the uterine cavity structurally and mechanically achieved within the fallopian tubes? Through the combinations of muscular peristalsis and breathing of cilia. Option B. 66. At what specific phase of cellular division are the primary oocytes suspended throughout a female childhood? Prophase of meiosis 1. 67. Out of the thousands of primordial follicles present before the birth, approximately how many ever successfully develop into secondary oocytes releasing during ovulation? About 450. Option C is correct. 66. Which treatment accurately describes the formation and development timelines of pneumonia is presented in the they are produced before birth, during fetal development, and under coma. 60. Five. ये वाला ये 67 और अब सही हो गया. 69. During abundant fertility year, which specific hormones drive a primordial follicle to develop into the mature reproductive follicle? Have stage का काम है. Follicle stimulating hormones का काम. 70. The second meiotic division is arrested at which specific stage after fertilization occurs? Option B में phase 2 base को stop किया जाता है. 71. What specific structural development marks the transition of primary follicle into secondary follicle? The formation of fluid-filled phase called the antron. Option B. 72. What is the genotypes of male with hemophilia? Option B. 73. A carrier female for hemophilia is crossed with a normal male. A carrier female. Female क्या है? वो आपके पास carrier है. A carrier female for hemophilia. जो है वो carrier है, is crossed with a normal male. Male जो है वो normal है. इस चीज का पूछ रहा है, what percentage of their daughter will be hemophilia? Cross करते हैं. हमारे पास इसकी daughter आ गई normal है, और ये इसका son इसके साथ हमारा ताल्लुक है. ये इसकी daughter आ गई, ये भी normal है लेकिन ये carrier है. और ये इसका सन आ गया. तो अगर देखें तो ऐसो 0%. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसकी डॉक्टर जो है वो हेमोफिलिक नहीं है. अच्छा 624 पे आते हैं.
What percentage of the son a carrier again E cross a carrier female for hemophilia is crossed with a normal male. What percentage of the sons are expected to have hemophilia? सन दो में से एक hemophilic है 100 में से कितने होगा? 75. Why are the males more frequently affected by the hemophilia than the female? क्योंकि आपको पता है कि ये X-linked recessive disorders है. मेल में छोटे एक X होता है इस वजह से. तो आप 76. A hemophilic male. Male इस वक्त जो है hemophilic है. Again. Male is a homozygous normal female. Females are more completely normal. What is the chance that their children will have hemophilia? इनकी बच्चों में chances जो है नहीं. ये उसका सन आ गया, ये डॉक्टर है, ये कैरियर है लेकिन नॉर्मल. इसका सन आ गया, ये भी नॉर्मल है. जिसकी डॉक्टर है, ये भी आपके पास कैरियर नॉर्मल और ये इसका सन आ गया, ये भी नॉर्मल है. तो 0 ऑप्शन ए. 77. What percentage? दोबारा again ये क्रॉस. A hemophilic male marries a homozygous normal female. What percentage of the daughter will be carrier for hemophilia? So दो daughters हैं और दोनों carriers हैं, तो 100 में से कितने होंगे? 100. Option C is correct. 78. If a carrier female अब जो है वो हमारे पास carrier है. Marries a hemophilic male. Male जो है वो हमारे पास hemophilic है. What is the probability of producing a daughter with hemophilia? Hemophilia daughter chances कितनी है? C इसकी daughter है लेकिन normal. C इसका son है normal. C इसकी daughter है hemophilic और ये इसका son है. तो daughter कितनी है? 2 है. 2 में से एक hemophilic है. So 100 में से what is the probability of producing a daughter with hemophilia? So 50% daughters are hemophilia. What is the probability of producing a daughter with hemophilia? दो डॉक्टर हैं, एक ये डॉक्टर है और एक ये डॉक्टर. What is the probability of producing a daughter with hemophilia? तो दो डॉक्टर हैं, दो में से एक जो है वो hemophiliा का है. वाले 75% है. अच्छा, if a carrier female marries a hemophilic male, female जो है वो carrier है, सब बरोबर का नंबर. और with a hemophilic male जो है वो hemophilic है. अब अगर ये क्रॉस कर ले तो ये डॉक्टर है, वो हमारे पास नॉर्मल कैरियर हुई. ये इसका सन है, ये इसकी डॉक्टर है. अब ये हमारे पास इफेक्ट और ये हमारे पास सन है. What is the probability of producing a daughter with hemophilia? What is
what is the probability of producing a 25%? 25% क्यों आ रहा है? What is the probability of producing a daughter with hemophilia? हमारे पास ऑफस्प्रिंग टोटल कितनी है? 4 है। 4 में से चूंकि एक डॉक्टर की हीमोफीलिया प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 100 में कितने होंगे? 0.25%। हाँ 77 है। दोबारा भाइयों मेरा तो 78 में ऑप्शन बी। 77 का कह रहे हैं hemophilic male, a hemophilic male already hemophilic है, ठीक है। मेरी जो homozygous normal female जो है वो homozygous normal है और मेल क्या है? मेल हमारे पास है hemophilic। आगे क्या पूछ रहा है? What is the chance that their children will have hemophilia? उसके बच्चों में कितनी परसेंट चांसेस मिले देंगे? A hemophilia male marries a homozygous normal female normal है। तो आगे क्या पूछ रहा है? What is the chances that their children will have hemophilia? What percentage of daughter will carries for hemophilia? Carriers for hemophilia, sorry, carriers। हाँ, कैपिटल H ये तो हो जाएगा कैरियर। जिसका सन है नॉर्मल, जिसका डॉक्टर है कैरियर, तो 100% डॉक्टर कैरियर है। 100% डॉक्टर तो सारी कैरियर्स है ना। डॉक्टर 2 है, दोनों कैरियर्स है। बोला डॉक्टर हो दाम डॉक्टर दे डॉक्टर हो दोनों दी दोनों डॉक्टर कैरियर्स दी 100%। अगर एक डॉक्टर हमारे पास 78 वो 78 था वो बोला करना। If a carrier female marries a hemophilic male, what is the probability of producing a daughter? What is the probability of producing a daughter? Within the daughter की comparison नहीं आया। With producing a daughter, offspring में से daughter की production हुई है, तो offspring 4 बनते हैं, 4 में एक daughter आ गई, तो 70। हाँ, अगर वो पूछ ले कि how many daughter will be hemophilic, तो not in the offspring, within the daughter, तो तब हम 50%। ना ब्याह हम 25% वैसे फर्क सब के देवी का नाम से। what is the probability of producing a daughter? What is the probability of producing the daughter? तो daughter की probability 4 में से आप लेंगे ना, ऑफस्प्रिंग जितने बनते हैं उनमें आप डॉक्टर की प्रोबेबिलिटी लेंगे। इस वजह से जब वो ये ना कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डॉक्टर, और वो ये कह दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज हीमोफिलिक, सो द डॉक्टर इज हीमोफिलिक। अब डॉक्टर की बात आएगी तो हम डॉक्टर को डॉक्टर के साथ कंपेयर करेंगे जिस तरह की यहां पे हुआ। 79 व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न डज हीमोफिलिया एग्जिबिट? X-linked recessive। 80 from which parent does a male child inherit his hemophilia allele? Mother only। और लास्ट MCQs है a normal appearing female whose father had a hemophilia, a normal appearing female whose father had a hemophilia marries a normal male, what is the probability that their first son will be hemophilic? A normal appearing female हमारे पास क्या है? खुद वो नॉर्मल अपीयरिंग है, whose father had hemophilia, इसका बाप हीमोफिलिक था तो ये कैरियर है। marries a normal male जो है वो नॉर्मल है,
So what is the probability that their first son will be hemophilia? तो सन की probability कब आएगी? ये आपके पास सन की probability एक ये हुआ और दूसरा सन आपके पास ये हुआ, सन 2 है, एक हीमोफिलिक निकला, 50%. Option C is correct. Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.